because this is the uh, object of subject name means we can make this is also you subject. Array, I Okay. forgot. Let me ask Poonam if she is there. Poonam, what should we do now and why? Acha, Now we Poonam will is take there. the first one object in the we will change the object into the subject and we will take the first one object as Sir, can I try? Yes, why not? Have you seen videos? Yes, sir. We should take you as a object because you is a living object here. living Yes, object. you is a living object. So for competitive purpose, you should use living object. We cannot give number one or two. It is not good. We have given, but wherever is the living object, we should take it firstly to get the numbers in school exams, college exams, and competitive exams. So, Ritu, what is the subject of you? Use the living subject. Aparna, what Sir, is the please come subject of again. you? Please come again. Don't worry, Aparna will answer. You the subject of you is you. Yeah. Okay, you asked the same question to Sarika. Sarika, what is the subject of you? What is the subject of you, Sarika? You is the subject of Yudi. Sarika asked the second question to somebody. जी. Uh, Ritudi, what is the second rule of passive voice? The second rule of passive voice is thereafter um, we will take helping verb if it is present. Okay, Aparna, what is the second rule of passive voice? Then we take the helping verb accordingly if it is present. Accordingly. So, Sarika, should we take will as it is or should we change? Sir, we should take will as it is. Ask Sarika, you ask the third rule to Ritu. जी. Ritudi, what is the third rule of passive voice? The third rule of passive voice is then we will recall the be, the god of passive voice. Thank you, Ritu. Aparna, what is the third rule of passive voice? Now we remember the god of passive voice that is be. Okay. Aparna, ask the next related question to Sarika. Okay, Sarika, when be comes in future, what are the forms? When Mr. B comes in future in its original form with the help of will or shall. So we will take Mr. B as it is. Sarika asked the next rule to Poonam. Poonam has come. जी. Poonam Bhabhi, what is the fourth rule of passive voice? The fourth rule of passive voice is we change uh,
Um, we change the main verb into the third form of the verb. V3. Ritu, what is the main verb in upper one sentence? The main verb is in this sentence is give. Third form of what is third form of give? Third form of give is given. Sarika, what is Aparna? What is the fifth rule of passive voice? Aparna, what should we do now? Mm, Now we take the second object of the upper one sentence. Ask the next person, what should we do now? You will be again. What should we do now? No, we Poonam? should Whom are you asking? Poonam. now lastly uh, we should change the subject into the object and so object. Sarika, what is the last rule of procedure? So lastly, we change the subject into the object with the help of by. Poonam, your network is not working properly. Your voice is chopping and lagging. Video is lagging. Disconnect and connect yourself again. So we have made first sentence that is grammatically correct. Uh, चलो इसको एक क्वेश्चनिंग के रूप में करके देखते हैं. Sarika, by whom will you be given a ticket? Sir, I will be given a ticket by the manager. तुम्हें किसके द्वारा टिकट दी जाएगी? सर, मुझे मैनेजर के द्वारा टिकट दी जाएगी. अपर्णा दी, by whom will you be given a ticket? Sarika, I will be given a ticket by by the manager. Should I take or should I change object? Same as it is, no? Okay. Ritu, by whom will you be given a ticket? You are mute, Ritu. I will be get a ticket by the manager. Okay, Poonam answer. I will be given a ticket by the manager. Ask to Ritu. Ritu, whom will you be given a ticket? Sorry, I come will be again. अच्छा, whom will be you? Will you be? Whom will you be? Okay, Sarika, you Okay, ask to Ritu. जी. Ritu di, by whom will you be given a ticket? I will be given a ticket by the manager. Poonam, by whom will you be given a ticket? I will be given a ticket by the manager, Ritu. Sir, by whom will you? Okay, Aparna, by whom will you be given a ticket? Yes, Poonam, I will be given a ticket by the manager. Okay, guys, this is the sentence
in which you can get the numbers. Now let's come out of the grammar and try to make a practical sentence which will be useful. So, uh, Poonam, how should we make the another sentence? So we can take a second object, non-living object. Correct. That is, That is a ticket. Should I say a full sentence? yes, please. Okay. A ticket will be given by the manager. In this case, sir, we should leave the living object in from sentence, because in Still upper, still there is a little non-practical thing. So let me sir, consult with Aparna and Sarika. sir, should I try? So You here, know, second one's objects, object use, the subject of you will be here, me, let's see what Aparna says. your. Aparna, how will you form? Uh, how will uh, a ticket will be given To me. only we will take only this sentence. A ticket will be given. Sarika, what do you say? Sir, I go with Aparna. Their ticket will be given. Okay. Ritu, what do you say? A ticket will be given to me. Now, Poonam, what do you want to say again? So if we are taking upper one sentence, their subject is you, then we can say it, a ticket will be given to you by the manager. अब अपन बाय से तो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं पूनम, है ना? तो यू तो ठीक है, वहां पे है तो अपन ने ले लिया। अब यहाँ एक चीज हमें बिल्कुल मन से लगाना है जो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है बिना किसी नियम के, बट लुकिंग प्रैक्टिकल, एंड To दैट you. इज To. To you. To me बोल दिया मैंने. अब ये सेंटेंस जबलपुर में लड़कों ने तो काफी सुना, बोला और फील किया होगा। तुम लोगों को भी शायद याद आ जाए कि एक पिक्चर लगी है, वो उसमें टिकट नहीं मिल रही थी, बहुत भीड़ थी, तो वो अपने दोस्त के पास गया, अब यार तेरी तो मैनेजर से पहचान है, उससे पहचान है, टिकट वाले से, तो मेरे को टिकट दिलवा देगा? तो उसने बोला चिंता ना करो, तुम उधर पहुंच जाओ, तुम्हें टिकट मिल जाए, खत्म बात। You will be given. बिल्कुल यही होता है जबलपुर में. तुम पहुंच जाओ, बस सारा काम हम करवा के. चिंता ना करो, तुम्हें टिकट मिल जाए, और ब्ला ब्ला ब्ला, जबान दे रहा बड्डे, तुम्हें टिकट मिल जाए। और मिल भी जाती है सर. उनकी जबान पक्की है. A ticket will be given to you. अब हम Ticket इसको तुम्हें सीधे ना बोले, कुछ प्रैक्टिकल बना लें, ठीक है ना? जैसे पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, सपोज आपने कॉल सेंटर में फोन लगाया, ओके मैम, ओके मैडम, द पैकेट विल बी डिलीवर्ड बाय 15th of Jan। ठीक है मैडम, पार्सल जो है 15 जनवरी तक पहुंच जाए। लेट्स मेक सम क्रिएटिव सेंटेंस, प्रैक्टिकल सेंटेंस। the result will be क्या घोषित displayed डिक्लेयर declared a result will be declared to you by the March। by the
हाँ, अप्रैल, जो भी। A portion will be sent to you by upcoming week. Coronavirus will be run by the March. come again. And So complete the process. coronavirus will be run by the March. March तक coronavirus भाग जाएगा. Run. Okay. रन अवे आएगा ना शायद, रन अवे नहीं, रन ठीक है, रन अवे बाय द मार्च. Uh, speech will be delivered. Delivered in next month. Next month speech दी जाएगी by me. मेरे द्वारा अगले महीने Government will be declared lockdown again. नहीं, lockdown will be अच्छा, lockdown will be declared. government subject हो जाएगा ना. हाँ, lockdown will be declared very soon in Mumbai. पूनम, एक शब्द सुना होगा क्लीनिंग वीलिंग के चक्कर में, कोरोना विल बी वेनिस्ड बाय मार्च. स्कार वैनिश का एक पाउडर आता है ना पिंक कलर के डब्बे में. सर वैनिश एक खुद भी डिटर्जेंट पाउडर का नाम है. हाँ, वैनिश पाउडर. sir, actually it is like sentence. Metro train will be started by the 26th of January from our place. So मेरी place से शुरू, तो from लगा सकते हैं ना. My area, from your area, metro train will be started from your area. By the 26th of January it is started. अपन ना. हाँ, अच्छा, it's true sentence. School 20 Omicron cases will be remove my building on after 15 days. बन गया गड़बड़. complete the process. Diagnose और remove. रिमूव मतलब हट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. यार नहीं, गड़बड़ हो रहा है दिमाग में, हिंदी सेंटेंस ही नहीं है कुछ भी. 20 ओमिक्रॉन के केस हमारी बिल्डिंग से 15 दिन बाद हट जाएंगे. 20 ओमिक्रॉन केसेस विल बी रिमूव from our building. So By 20. Okay. You are mute, sir. You Sir, are you mute, are sir. mute. The new movie of Shah Rukh will be released on Eid. School will be All the reopened. political rallies will be stopped in UP. The school will be reopened अभी next year. Sarika, go ahead. Sarika, after you. all the political rallies will be stopped in UP. यूपी में सभी पॉलिटिकल रैली स्टॉप्ड हो जाएंगी.
As for school reopening, school will be reopened next year. यहाँ होने की ध्वनि दिखाई दे रही है हर सेंटेंस में। Oh, हाँ. बी मेन वर्ब की तरह काम करे पूनम, और ये एडजेक्टिव की तरह। दोस्तों, पैसिव वॉइस जब हम शुरू करते हैं बिल्कुल सीधे सिंपल सेंटेंसेस देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। अभी ये वैरायटी ऑफ सेंटेंस दिए, लेकिन अभी और दो चीजें बाकी हैं जो चैप्टर हम आपको दे चुके हैं उनमें से। तो एक अगला सेंटेंस जो है वो लिखना, आर यू गिविंग नंबर्स अपर्णा, पूनम, सारिका? Yes, sir. It is 11 number. Yes. She was absent, but she was so punctual. She is punctual now. Still, she is counting the number of sentences. Actually, I have Okay. watched the videos, na, all because of Bhabhi's effort. I did not miss anything. Aparna asked first question to Poonam. Punam, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to order or request. It's a go to ask. Upon order or request? No? Oh, okay. Sarika, what is please in this sentence? अब इसमें दोस्तों वो सारे डिटेल पूछने की गुंजाइश है नहीं, है ना? तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा। हो सकता है कॉलेज में पैसिव वॉइस खेला हो, स्कूल में पैसिव वॉइस सिखाया गया हो, लेकिन ऑर्डर रिक्वेस्ट के सेंटेंस सिखाए गए होंगे कि नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे एक नियम हम आपको बताते हैं जो सबसे जरूरी है, वो बिल्कुल नियम के तौर पे ही जहन में बैठाना है आपको। ऑर्डर रिक्वेस्ट का जब भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके इस शब्द का प्रयोग करना है। ये नियम के तहत आता है। दिस वर्ड विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर। उसके बाद अपन बाकी चीजें देखते हैं। रूल्स विल बी एज इट इज लेडीज, बट दे विल जम्बल। What is the first rule of passive voice, Ritu? Ritu, you are mute. I have to turn the page because I forget everything. No First, problem. passive voices. Um, Firstly, we will change the object into subject. Correct. Poonam, what is the object in this sentence? So T is the object in this sentence. Sarika? The T is the sentence. So firstly we put here let, then we apply the rule. We change the object into the subject. Aparna, what is the second rule of passive voice?
Then we take the helping verb accordingly if it is present. रितु से पूछो सहायक क्रिया कौन सी है? Ritu, what is the helping verb in upper one sentence? There is no helping verb. There is no helping verb. Ritu, ask the next rule to Sarika. Sarika, what is the third rule of passive voice? The third rule of passive voice. Now we remember the god of passive voice, that is be. अब दोस्तों पूनम बाबू, आपको हमने इसको भगवान का नाम देके आपके जहन में बिठा दिया है, आप हमेशा इसको याद करेंगे और वो आएगा। तो इसको आप जिस तरह से नाम बदल के मन में रखना चाहें या समझाने की दृष्टि से रख सकते हैं, लेकिन बी का एक अहम रोल होगा। एंड वन मोर थिंग, मिस्टर बी जब टेंस में आएंगे तब तो अपना रूप बदलेंगे, लेकिन टेंसेस के अलावा किसी भी चैप्टर में आएंगे तो अपना रूप नहीं बदलेंगे, लेकिन भगवान आएंगे जरूर। अब अगला रूल सारिका को पूछना था। जी अपर्णा दी, what is the fourth rule of passive voice? Now we change the main verb into the V3. मेन वर्ब कौन सी है पूछ लो नेक्स्ट कैंडिडेट से। Poonam, what is the main verb in upper one sentence? Bring is the main verb in upper one sentence, and the third form of bring नहीं, वो आगे से पूछो। okay. Ritu, what is the third form of bring? The third form of bring should be brought. सेंटेंस तो बन गया। अब चलिए इस सेंटेंस को एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को क्वीन एलिजाबेथ समझिएगा। Let the tea be brought, चाय लाई जाए। राजा महाराजाओं के द्वारा बोले जाने वाली सेंटेंस है, लेकिन आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको ये बदलना है वस्तु और वर्ब बदलना है और अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए। Let the गाजर का हलवा be brought. नहीं, be made. Yes. Let the गाजर का हलवा be made. गाजर का हलवा बनाया जाए। Let the medicine be given. दवाइयाँ दी जाए। let the take shower be नहीं let the take shower be नहीं let the shower be taken नहाया जाए let's नहाने क्या आएगा what should be done let the shower be taken शावर लिया जाए चलो बाहर पानी गिर रहा है तो शावर लिया जाए Let the butter chicken and butter naan be brought. सर आप थोड़ा साइड में हो ही ना, दिख नहीं रहा मुझे। Let the butter chicken and butter naan be brought. Butter chicken and butter naan लाई जाए। made Change the verb बेटा। हाँ, ब्रॉट नहीं, हमको मंगाना है सर, लाई जाए, हमको नहीं बनाना। देखो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, let the butter chicken and naan be presented. हाँ, yes.
Let the बटर butter चिकन और chicken and नान naan प्रस्तुत be किया जाता है. presented. Let the long drive be taken. Long drive ली जाए. Hmm. Let Let the the new dress little be weared. Sir. The worn. The let the new dress be worn. let the little kid be loved. नहीं, let the crying little kids be loved. छोटे रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए. Let the Let hot the coffee Aparna be Didi's drink. makeup. Okay, after you, Di. Let the hot coffee be drink. नहीं. ये वर्ग तो कितने दिनों बाद सुनने मिले. Let the hot coffee be drank. Drink. चलो सारिका तुम Drink, बताओ. drank, Drink, drank, drunk. drunk. ये कितना गंदा लगता है. taken Have. had Had. टेकन Drunk or gonna. टेकन टेकन. Let the hot coffee be taken. चलो गरम कॉफी पी जाए. Let the Aparna Didi's makeup be applied. चलो अपर्णा दीदी का मेकअप किया जाए. चलो. Let Anarkali be fixed in the wall. अनारकली को दीवार में चिनवा दिया जाए. Let the enjoy party. नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा बिल्कुल. Let the vacation be enjoyed. छुट्टियों का मजा लिया जाए. let the student be taught. चलो बच्चों को पढ़ाया जाए. let the poor student be taught. चलो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए. let the party be begun. पार्टी शुरू की जाए. सारिका तुम ये बनाओ. उसे फांसी पर लटका दिया जाए. फांसी पे लटकाने को हैंग कुछ आपने दिया था फांसी पे लटकाने के लिए स्पेसिफाई. Anybody Forgot. can. I also forgot. Hang out. hang till the नहीं capital नहीं वो वर्ब यही है. till the Hanging. death. let them be hanged till the death. उसे let let him Him. be hanged till the death. let him be hanged. वो तो अब अपने यहाँ के कोर्ट का है. let him be hanged. उसे फांसी पर लटका दिया जाए. Let the tasty food be enjoyed. स्वादिष्ट भोजन का मजा लिया जाए. let the weather be enjoyed. enjoyed में याद आ गया. मौसम का मजा लिया जाए. by playing outside while riding by riding outside.
Let the Let him the work autobiography. be completed. उसे काम किया. Let him the work be completed. उसे उसका काम किया जाने नहीं कंप्लीट करने दिया जाए. Let him complete his work. Simple. अच्छा. Let him complete. So let the new work be done. कुछ नया किया जाए. Let the door be opened. चलो दरवाजा खोला जाए. Poonam's maid has come. Let the door be open. टेंशन में उसको सुनाई हुई नहीं दे. She is speaking with somebody. दोस्तों इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बनाते हैं जो कि ग्रामर का अनुसरण तो नहीं करता है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है. यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, लेकिन आप ऑर्डर रिक्वेस्ट के पैराग्राफ में जाके ढूंढेंगे. अब सारिका से पूछ लेते, उसको याद अच्छे से रहता है. सब्जेक्ट के बारे में ऑर्डर रिक्वेस्ट के पैराग्राफ में कुछ पॉइंट लिखवाया है अपर्णा या सारिका को याद हो तो. सर सब्जेक्ट उसमें यू छुपा रहता है, जब कभी हमें जरूरत पड़ती है, सो वी कैन यूज इट. तो अभी हमें जरूरत पड़ रही है मान लो, तो हम उसको निकाल रहे हैं, वहां कहीं है नहीं. तो जो प्रैक्टिकल सेंटेंस बनते हैं रियल वर्ल्ड में, अब हम वो वाला सेंटेंस देखने जा रहे हैं. तो हमने वहां से ये जो छिपा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया. अब यू तो निकाल लिया, तो अब आप बताइए कोई भी एकदम कॉमन सेंस यूज करके कि यू के बाद हम क्या रखें और क्यों रखें. सर लेट रखेंगे. नहीं, ये वाला तो हो गया. एक तरीका ये है. अब हम एक दूसरा तरीका सीखने जा रहे हैं, एक और पैसिव वॉइस इसका बनता है. हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सर. क्या? विल. नहीं. अपर्णा पूनम. आर. यस. In present. हाँ, बिल्कुल सही. यू आर. अब हमें यहाँ देखना होगा कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, उसके हिसाब से फिर वर्ब यहाँ लगेगी. यहाँ पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया है, लेकिन जो मूल बात है वो अभी तक यहाँ नहीं आई है. तो वो कैसे रखें? You are requested टू by लगा the के. conjunction word to. अब ये हम मन से लगा रहे हैं, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं. The tea be brought. You are requested to bring the tea. Oh, हाँ. Bring. हाँ. To के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव वॉइस तो यहाँ बन के तैयार हो गया. हमने बोला था, सुना नहीं ध्यान से अपन. पैसिव वॉइस तो पहले ही बन गया है. अब जो मूल बात कही जा रही है वो हमें लेकर आना है. तो वो इस तरह से हम ला सकते हैं. और ये सेंटेंस रियली प्रैक्टिकल है. Whenever you go for an interview and you write down the application, याद कर लो अधिकतर एप्लीकेशन यहीं से शुरू होती है. You are requested to give me one chance in your dash dash dash. हाँ. और ना केवल एप्लीकेशन में बल्कि बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग तुम्हें देखने मिलता है. अगर किसी ने देखा हो तो बताए.
जैसे you are requested to put the garbage in the dustbin. You are. I have seen in a parlor. You are requested um, to keep your shoes out. पार्लर में शायद ये भी हो कि you are requested to bring your card with you, monthly card with you. Hmm. You are requested to take care of your belongings. Hmm. Very nice. Yes, yes. Yes. You are requested to take care of your belongings. You are requested to show the Aadhaar card here only. No? Yes. You are requested to keep calm in hospital. Hospital in generally we have seen in hospital. You are You are requested to keep the hospital clean. You are you are requested to keep your vehicle in parking. Vehicles. you are requested to switch on your mobile. To Switch off. keep switch on your you are Switch off. requested to switch off your mobile. Or So you are you are requested requested. to switch on your camera while the online classes. You are requested to do not smoke here. नहीं ये कैसे बनेगा कोई बताए बेटा डू तो नहीं आएगा इसमें You are You aren't. requested Not to to do Not not to smoking. not to not smoke Requested not to smoke. not to you smoke. are requested not to smoke Okay. you are Negative. requested to tie your seat belt. You are requested to fasten your seat belt. यस ये वहां पर ऊपर नहीं टन से आवाज आती है जल जाता है fasten your seat belts you are requested to close the channel gate of the lift You are requested to please close the door. किसी किसी लिफ्ट में आवाज आती है. Please close the door. The door. Please close the हमारी door. हमारी लिफ्ट में आता है. Please close the Okay. door. Door. You are requested to wait your turn. wait for जी. You are requested to wait for your turn. You are requested to sanitize your hands. You are requested to maintain the social distance. You are requested to come on time. You are requested to wear mask every time. I have sent one message regarding mask. The spelling of mask is different. Masqueus. It is an verb also. Mask. Have you mask? mask up mask up It is taking mask. have you written this sentence Yes, sir. You are requested to maintain your notebook for your benefit.
You are learning lines for your sons. Mind it. Open the gate. Okay. Anybody ask whoever is. Which chapter does this sentence belong? Ritu? This That sentence belongs to order and request. Open the gate. Sarika, which chapter does that sentence belong? this sentence belongs to order or request. Sarika asked the next related question. According to the first rule of passive voice, Bhabhi, no, according to the order or request sentence, what should we do first? Poonam Bhabhi. According to order or request, first we should take here let. Okay. What is the first rule of passive voice, Aparna? We, according to the passive voice of first rule, we change the object into the subject. So, what is the object in upper one sentence, Ritu? The gate is the object in upper one sentence. It's your go to ask. Next question. Okay. Sarika, what is the second rule of passive voice? According to the second rule of passive voice, we take the helping verb accordingly if it is present. Poonam Bhabhi, is there any helping verb in this sentence? There is no helping up in this sentence. Aparna, so what is the third rule of passive voice? The third rule of passive voice is now we remember the god of passive voice, that is be. And uh, what should we do with the be, Ritu? Should we take as it is or we have to change in order and request or request sentence? We will take be as it is. Sarika, what is the fourth rule of passive voice? The fourth rule of passive voice is we change the main verb into the V3. Parnati, what is the main verb in upper one sentence? Sarika, open is the main verb in upper one sentence. Um, Poonam, hmm, what is the Third third form form of of open is what is the open. fourth rule of what is the fourth rule of passive voice? Fourth rule of passive voice is we change the main verb into the V3. Ritu, what is third form of open? The third form of open is opened. Now for the next sentence, who will start? Sarika's go. Ji. So, sir, we should make this sentence in request because we made first sentence na, in order. So, can Rethink. I'm not getting, sir. Poonam, Aparna. Sir, we take the invisible subject, that is you, first.
And then helping verb and are helping with third form of the requested. The third Ordered. form of the अच्छा, yes. you're ordered to open the gate. Then we will take the conjunction word and to and take the दोस्तों ग्रामर में इसके और बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, उस पर दृष्टि आप डाल सकते हैं। उसमें पहचानना होता है, अगर कोई मेजर किसी सैनिक से बोल रहा है तो वहां कमांड हो जाती है, यू आर कमांडेड टू डैश डैश डैश। तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज और बांटी गई है, लेकिन ये दो प्रचलन में है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो वो मैंने आपको बता दिया है। आप और जानकारी चाहें तो थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, बच्चे की बुक में भी आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ आज विराम दें क्या? Should we conclude it here today? And tomorrow will be the last day of this phase of passive voice, that is called third phase of passive voice. And tomorrow we will enter in fourth phase also. So only some sentences, but some interesting sentences are rest. We will finish it tomorrow. And at the end, I will take only 10 to 15 minutes for the real passive voice. It will be the fourth phase. And I will give you a homework kind of thing. So fifth phase will be done. And if you still have any questions, so you can write them down and you can ask me tomorrow. But I think the maximum questions are answered by the, but still, as we finish it, I will ask you, I will give you time to ask questions. So we are concluding it here. God bless you. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Bye bye. Bye bye.